Okay, student. Good morning, everybody. Last time we discussed about exercise 3.4 and discuss word problem, 5 word problem, and give the homework in 2 and 3 क्वेश्चन गिवन इन होमवर्क. आपने होमवर्क में जो 2 या 3 क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए होंगे. नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन दिस टाइम इट इज़ रिमूव्ड. इसको रिमूव कर दिया गया है इस सेशन के लिए, तो इस बार ये 10th के एग्ज़ाम में नहीं आएगा. तो डिपेंड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्सरसाइज 3.5. फर्स्ट क्वेश्चन डिपेंड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज़ रिमूव्ड. सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो depends on cross multiplication, so it is removed. And third question also removed. And fourth question is not removed because from the pair of linear equation following problem and their solution if they exist by the any algebraic method. Any algebraic method मतलब किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 4 हमें सॉल्व करना है और इस 4 के अंदर 5 क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depend on the number of day one has taken food in the mess, and when student A taken food for 20 days, she had paid to 1000 as hostel charge, where a student B who takes the food for 26 days paid 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो हमें यहाँ पे फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे फाइंड करना है. सो फर्स्टली वी सपोज देम, लेट स्टार्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट द फिक्स्ड चार्ज equal to rupees X and the cost of food per day be equal to Y, rupees Y. Next, according to question here, student A takes food for 20 days and she has to pay 1000. स्टूडेंट ए ने 1000 रुपीज़ पे किए, तो उसने फिक्स चार्ज तो दिया है, फिक्स चार्ज एंड इन मेस टेकन द फूड, उसने 20 दिनों तक फूड टेक किया. सो टेकन द फूड चार्ज इज 20 एंड टोटल अमाउंट इज 1000. स्टूडेंट ए पेड 1000 फॉर 20 days बिकॉज ही टेक्स 20 days फूड इन मेस एंड फिक्स चार्ज ऑल्सो ऑफ हॉस्टल. ओके, तो हॉस्टल का चार्ज और 20 days फूड का चार्ज जो है वो दोनों मिलके टोटल अमाउंट 1000 उसने पे किया. अगर 1 डे टेक करेगा तो 1 डे का अगर अमाउंट 20 रुपये है तो मेस का चार्ज 20 रुपये हुआ, लेकिन 5 days तक उसने फूड टेक किया है तो 5 मल्टीप्लाई विथ 20 100 रुपीज़ हो जाएगा. इस तरह से 20 days का जो अमाउंट है 20 मल्टीप्लाई विथ वाई 20y. सो फिक्स्ड अमाउंट और मेस अमाउंट दोनों का मिला के उसने 1000 पे किया. तो इट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट अगेन student B, this equation for the student A, and next student B, and student B give the fixed charge and 26 day food means 26y. तो total amount is 1180.
So it is equation number 2. You solve the remaining question by the substitution method या elimination method. Okay, so you solve remaining solving by substitution method and और या तो आप इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करें या एलिमिनेशन मेथड. ओके, two method we discuss about the two methods, so you solve them and this type question solve in previous video. इस तरह क्वेश्चन का हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो आपके लिए आप इसको कर सकते हैं उसको दोबारा देख कर. ओके, स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन. Second question is here. A fraction become 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it's become 1 by 4 when age is added to the denominator. Find the fraction. Okay, so firstly we'll add the numerator and denominator, and this type question we discussed in previous video. तो यू सॉल्व इट बट वी मेक द टू इक्वेशन. हम यहाँ पे 2 इक्वेशन बना लेते हैं और उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द denominator be y. So fraction equal to x by y. Here according to question, fraction become 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. 1 subtract from numerator means top side is numerator. So 1 subtract from numerator x minus 1 and denominator is same, and fraction become 1 by 3, so equal to 1 by 3. Here next step, solve by the cross multiplication. 3 multiply with x minus 1, so 3x minus 1 equal to 1 multiply with y, cross multiply, and 3 multiply with x, 3x minus 3 multiply with 1, 3 equal to 1 multiply with y. Here 3x minus 3y equal to y, and left hand side we write the variable and right hand side we write the numbers. So y come on other side, so it is a negative because here is positive, so come on other side in negative, and minus 3 is negative, so go to other side in positive, so it is equation number 1. Now next equation according to question, you write in the full form. Here it's become 1 by 4 when 8 is added to denominator. 8 added to denominator, so numerator is same and 8 added to denominator means y plus 8. 8 को हमने 8 किया y में, fraction become 1 by 4, so equal to 1 by 4. Next step, by solve cross multiplication. So 4 multiply with x, so here 4x and y plus 8 multiply with 1, so 1 multiply with y plus 8, and 4x equal to 1 multiply with y plus 1 multiply with 8. So here 4x and y come to other side and minus, and 8 is here, so equation number 2. It is equation number 2. And remaining question in homework, remaining solution solving in homework. ओके, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बाय
any method means substitution method, use any method, use any method. ओके, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.5, fourth question and part is third question is here. Yes scored 40 marks in the test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for the each correct answer and 2 marks been deducted for the each incorrect answer. When Yash would have scored 50 marks, how many questions were there in the test? यहाँ पे बताया कि यश के 40 मार्क्स आते हैं, गेटिंग द 40 मार्क्स, ही write the right answer and getting the 3 marks, and write wrong answer, 1 marks is reduced means 1 मार्क्स कट हो जाता है अगर 1 आंसर इसने रॉन्ग लिखा है. सो इस तरह से इसके 40 मार्क्स आते हैं. तो सॉल्व हियर हम राइट और रॉन्ग आंसर को लेट करेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर be x and number of wrong answer be y. So here total number of question is here, number of question equal to x plus y, because number of question is x, right? Yes, written in right, and number of question y is written in wrong. So total number of question is x plus y. So we find the x plus y, and according to question here, yes, getting the first condition 40 marks, and 40 marks for 3 marks each, getting 3 marks getting each right answer. So right answer is x and getting 3 marks per answer. Per answer means 1 answer is 3 and 2 answer is 6. So 3 multiply with 2, 6, and 3 answer is right. So he getting the 9 marks because 3 multiply with 3 equal to 9. So he write the x answer is right, number of x answer is right, so getting the 3x, and y answer is wrong, so getting 1 multiply with y means 1 answer is wrong, so 1 multiply with 1 marks is reduced, and 2 answer is wrong, so 1 into 2 marks is reduced means कम हो जाएंगे. अगर 3 आंसर उसने रॉन्ग लिखे तो 1 into 3 मार्क्स कम हो जाएंगे. तो यस गेटिंग द y आंसर इज रॉन्ग, सो y मल्टीप्लाई विथ 1, सो y मल्टीप्लाई विथ 1 इक्वल टू y, सो y रिड्यूस मीन्स y कम करना पड़ेंगे, तो 3x माइनस y, तो टोटल मार्क्स इक्वल टू 40, तो इसके 40 मार्क्स टोटल आए. तो इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ according to second condition, 4 marks been awarded for the each correct answer. 4 marks अगर करेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं तो 4x means total marks for the correct answer. Okay, and 2 marks been deduct for the incorrect answer, और जो 2 मार्क्स है वो
डिडक्ट हो जाते, कट हो जाते हैं इनकरेक्ट आंसर। तो इसने इनकरेक्ट आंसर y लिखे हैं, तो y मल्टीप्लाई विथ 2। सो राइट आंसर से रॉन्ग आंसर को माइनस करेंगे तो टोटल मार्क्स इज 50। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स इज 50। सो हियर राइट इन द सिंपल फॉर्म, हियर कॉमन इज 2, सो कॉमन 2, तो 4 में से 2 कॉमन हुआ तो 2x एंड 2 इज कॉमन, सो y and here is 50 and 2x minus y equal to 50. 2 go to other side upon, तो 2 1 जा 2, 2 25, तो 2x minus y equal to 25. It is equation number 2. We solve the equation 1 and 2 by the any method. तो we solve elimination method. तो by elimination method by equation 1 and 2. Here equation 1 is 3x minus y equal to 40 and second equation is 2x minus y equal to 25. So in elimination method वेरिएबल न्यू नंबर्स मीन्स y वेरिएबल के जो नंबर्स है वो इक्वल है। सो हियर सिंबल इज सेम, सो वी कन्वर्ट इन द अपोजिट सिंबल, सो वी सब्ट्रैक्ट देम। तो इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, सो हियर चेंज द सिंबल, सो 2 इज पॉजिटिव सो नेगेटिव and y is negative so positive and 25 is positive so negative. So here 3x subtract 2x, so answer is x because 3 subtract 2 answer is 1. 1 no right, 1 को लिखा नहीं जाता, no right is 1, only write the x and y is negative and y is positive so is subtract equal to 0 and here 40 minus 25 answer is 50. So here value of x is 50. Okay, next by equation 1 and 2, 1 या 2 से किसी से भी हम y की वैल्यू निकालते हैं। by equation 1 3x minus y equal to 40 and put the value of x, 3 multiplied with 15 minus y equal to 40. So here 45 minus y equal to 40 and minus y equal to 40 minus 45 because 45 go to other side and it is minus y equal to subtract them and 45 minus 40 means 5 and greater number is negative, so minus 5 and minus cancel, so y equal to 5. So here answer is total number of question equal to x plus 5, so 15 plus 5 equal to 20 questions. So write the answer, therefore total number of question is 20. So it is answer. Okay, so we discuss next question number 4th. Okay student, question number 4 is here. Question number 4 is here. Place A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at the different speed, they meet in the 5 hour, and if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? Okay, so here in question, two place A and B, between the distance between A and B is 100 km. So firstly
we find the speed of two cars. So let question number exercise 3.5 question number 4 part is फोर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का. इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व. फर्स्ट step is let the speed of first car be x kilometer per hour and the speed of second car be y kilometer per hour. Here in case number 1, according to first situation, the first car and second car they travel in same side, same direction. Also it means with diagram, explain with diagram. So here it is a place and it is a B place. Okay, car first start from A place and car second start from B place. Okay, and same direction go to this side left to right, and B second car is go to same side. Okay, and they meet and A and B distance between the 100 किलोमीटर. A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर. And after 5 hours they meet on C. Okay, after 5 hours they meet on C. Okay, so car A going to A to C and car B means second car is going to B to C. So here according to make the equation, so we first the distance covered by car first, distance covered by first car equal to, so we know that the formula of distance equal to speed multiplied time. Okay, speed multiply time. So here speed is x kilometer and time is 5 hours. So 5 multiply x multiply 5x kilometer. So first car travel covered distance 5x kilometer. Okay, 5 is time and x is speed, so 5x is total kilometer. Same distance covered by second car and speed is y and time is 5. Okay, speed is y and time is 5, so 5y kilometer is covered by second car. तो सेकेंड कार जो है वो 5y जाती है और फर्स्ट कार 5x जाती है. तो हियर 5x इज ग्रेटर, ज़्यादा दूरी है बिकॉज a इज हियर एंड गो टू दिस साइड एंड मेक द इन हियर. सो फर्स्ट कार ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय car first and car second covered minimum distance means minimum distance. So कार सेकंड कम दूरी चलती है, कार फर्स्ट ज़्यादा दूरी चलती है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम निकाल लें तो वो आएगा 100. सो हियर 5x minus 5y equal to difference between the two places A and B. 100
common is 5, so 5 is common, so x minus 5 is common, so y equal to 100, and here x minus y 100 upon 5, so cut by 5, so x minus y equal to 20. It is equation number first. Okay, in case second, they travel in अपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तब की बात बता रहे हैं हम. तो इन क्लास अपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स A place is here, B place is here, and car first go to this side, left to right, car first, and car go to second, car second, go to this side, opposite direction. Car first go to here and car second is go to here and meet the point C, and they meet point C. Okay, so distance covered by first car, so same formula use distance speed into time. So here 5 multiply with x, here time is 1 hour. After 1 hour, so time is 1 hour, so formula is same, speed into time. So speed is x and time is 1, so 1 multiply with x, so x kilometer covered, and same distance covered by second car, and time is 1 hour and speed is y, so y into 1, y kilometer. Okay, so in 1 hour, after 1 hour, car first covered x kilometer and car second covered y kilometer. So here कार फर्स्ट जो है वो x किलोमीटर आ रही है, कवर कर रही है x किलोमीटर, एंड कार सेकंड जो है वो y किलोमीटर आ रही है. तो टोटल जो होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, प्लस हो जाएगी. कार ए मतलब फर्स्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुई है कार बी के या सेकंड के द्वारा जो कवर हुई है, दोनों डिस्टेंस को अगर हम प्लस कर लें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, मीन्स x प्लस वाई. ओके, तो हियर टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर. इट इज इक्वेशन नंबर 2. तो बाय इक्वेशन 1 and 2, तो इक्वेशन 1 इज x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड सेकंड इज x प्लस वाई इक्वल टू 100. ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चन इन सॉल्व इन होमवर्क. remaining solution solving do yourself. Okay, by any method use substitution method या elimination method and you solve this question. Okay, and last question and question number 5 we discuss next video. And question number first is remaining question is homework, second is remaining question number question second is homework, and question number 4 also remaining is homework. Okay, so you solve the 3 question and write all the question in the fair copy. You complete your fair copy. Next time we discuss 5th question. Okay student, thank you very much. Thank you.